Okay. It's so nice to have Noor Said here, and my goodness, the mark she scored in 12 CBSE 21-22 exam was 98 out of 100, and that is a whooping score. And I'm so glad that she, wants to share this moment like with us, like inspiring the forthcoming students who will appear the board exam. Yes, Noor, how did you make this great score? Thank you so much, ma'am. So I think consistency is really important. You have to work every day. It's not like एक दिन पहले हो जाएगा सब. Chemistry is something that हर दिन you have to get through it. It's like if you lose grip, it's not coming back. So एक दिन you have to say the learning graph keeps on growing. So हर दिन करना is important. It and practicing question. I think just reading the textbook is not enough. Once you read the topic, you have to do practice questions. You have to do questions related to it. The PYQs, they are very important. And I think before going to any other book, NCRT is really important. The chemistry paper was wholly based on NCRT. उसके बाहर से I think कुछ भी आया था. And I think that's it. Okay, so like, do you think 11th standard chemistry is important for scoring this great big score, or just 12th is sufficient to go ahead? I would recommend one to not lose focus in 11 because I know I did and I failed. Oh my God. And then I had to go through the basics of 11th, ek do hafte mein full I had to do the basics so that the 12th topics I can understand. This is what I did, but I've made that mistake and I'm telling you all do not take lightly 11th ka any subject. In fact, I think these are the steps you have to go through each phase and eventually ऐसे नहीं तो कैसे कोई ना कोई टॉपिक आ जाएगा. So That you have means, to. yeah, that means 11th growing the basics is very important. Yes. Yeah, that's so nice. And one last thing, what advice do you have for these students who are appearing these 12 board exams? What advice do you give? Like in short, in say one sentence. Just one sentence. You probably did better than you think you did. I mean, Wow, that's so yeah, inspiring. yeah. Us, we all underestimate ourselves a lot, and I thought I really thought I did not do well, but I'm really proud of the result that I got. I thought I'll score really bad. I really, but I reached my expectations. So it was. Very good. No, it was such a pleasure having you, share your views. And I hope in some corner of some, state, you will inspire someone. Thank you so much, and it was great. Thank you, ma'am. I have finished discussing the nomenclature or the naming of aliphatics, cyclics, and aromatics. And if you have followed all the 6 videos of mine, you will be in a good position to solve a few problems. And I assure you that you will definitely be able to solve. Okay, so today what we will do is that I will give you a mixed bag of questions. Okay, एक मैं तुम लोगों को सिखाऊंगी और one you will solve for me. Okay, one you will solve for me. So shall we begin today's session? Okay, so my first question to discuss is this. I hope you still remember your cis and your trans compounds. Yes? Ah, if you remember, it's very good. Okay. So how a little bit of, a lecture. Okay. No problem, no? Okay. So what happens is that when you look out for cis and trans means you have a plane. So, you have groups above the plane and you have groups below the plane. So in this case, let us focus on one carbon. And since all the 4 groups are different, let us assign numbers to them. Okay. The
atom with lower atomic number is numbered 1 and the element with higher atomic number is given number 2. So we are done with carbon 1. Now let us go to the second carbon and number the groups according to atomic number. Out of hydrogen and chlorine, you know that hydrogen, अरे अभी मत बोलो, elements भी भूल गए, periodic table का निकालो, periodic table निकालो atomic numbers or proceed. Okay, you should not get stuck. So this is 1 and this is 2. So now let us focus on the numbers. And do we see similar numbers above the plane? Yes, we see similar numbers above the plane and similar numbers below the plane. So that means similar. मैंने word similar use किया ना, so similar means cis. So this is a cis compound. You know, depending on some terms like uh, German terms like Zusammen and Gegen. For example, if it is cis, you will call it Z. Okay, if it is cis, you'll call it Suzaman. So here, this compound, first of all, you've got to say whether it is cis or trans when some these sort of compounds are given to you. Okay, you have to know. I mean, you should. It's better you write it down. So yes, this is Z. Then do not follow the lowest addition rule. Now, I hope you remember it. So it is, and then you remember the lowest addition rule, लेकिन लिखना कैसे है? Alphabetical order में. So this is my carbon number 1, this is my carbon number 2. So this is 1 bromo. After writing the cis, the Z, you write 1 bromo, 2 chloro, 1 fluoro, ethene. Fine. I hope you have understood this and it's a reminder. So I have a task for you and the task 1 is your task. मैं एक सिखाऊंगी, एक तुम लोगों को प्रैक्टिस करना है ना, कैसे चलेगा? नहीं तो सिर्फ वीडियोस देखने से काम थोड़ी चलेगा, प्रैक्टिस भी करना है ना। चलो एक देती हूँ, तो जैसे मैंने रूल्स सिखाया था वैसे ही करना है। ऑलराइट, so this is task 1. Note it down, pause the video, note it down, solve it out, see if you have understood or you know how to do it. Okay, let us go to the second one. Easy है भाई। अरे एलिफैटिक, साइक्लिक्स, एरोमेटिक तीनों का जंबल अप करनी है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये हाँ, अब भी क्या होगा? You have a double bond ना, so double bond has more priority compared to the halogens. Priority series, if you are not familiar, hang on, it will come in my next videos. But double bond has more priority in the priority chart of functional groups compared to the halogens. So wherever the double bond is, you will give it number 1. But you will write in alphabetical order. Okay. So the bromo is first. So this is 3 bromo. Then 1 chloro. Cyclohexene. Hex 1 in लिखो और cyclohexene लिखो. It is understood that you know वहीं पे डबल बॉन्ड है ना, नहीं लिखा मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है। राइट, आगे बढ़ते हैं। टास्क, हाँ दे रही हूँ, परेशान मत होना। बोलोगे हम मैम आपने तो इजी सिखाया और हम लोगों को दे रहे हो टफ, वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे Cl है। सो दिस इज योर टास्क 2। डन, कॉपी कर ली, लिख ली। ओके, विल गो टू द थर्ड। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स भी लेना चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा? हाँ, बोर हो जाओगे। सही है। लेट अस गो टू द थर्ड वन, द वन विच आई विल टीच यू ना।
स्केलेटन्स चलता है ना, स्केलेटन्स का मतलब समझ में आता है ना, हाँ, फ्रेमवर्क। जो हाइड्रोजन जब नहीं लिखते हैं उसको हम लोग स्केलेटन बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन मुझे देनी है, और फिर उसके बाद 1 2 3 4th कार्बन में कुछ ग्रुप लगा देते हैं। अभी if I start numbering from this carbon as 1, I have 6 carbons containing the halogen as the longest chain. और एक तरीका लेते हैं. Okay, let us take another way of numbering. So let us number from here. 1 2 3 4 5 6 7. बोलोगे रूल पे रूल पे रूल, ये क्या है? Yeah, you have to know the rules, otherwise what is the use? So is it that you can take a shorter chain containing the halogen as the parent, or you take the longest chain as a branched halogen as the parent? So the rule of IUPAC says that you should take the longest chain as the parent, which may contain halogen in the branch. So the parent is heptane because it contains 7 carbons. Heptane. Okay. In the 4th carbon, we have a chloroethyl. So on the 4th carbon, in bracket, trying to show that this is a chloroethyl which is branched to heptane. So we have 4. Okay, one more thing. It needs to be specified whether, just give me a minute. Yeah. So this is the attachment 1 and this is the attachment 2. This was discarded. So you look at the green numbering, the ethyl is attached to the 4th carbon and the chloro is attached to the 2nd carbon of the ethyl. So you have to call it a 2-chloroethyl heptane. मजा आया? अरे वाह, वेरी गुड. तो एक टास्क देना चाहिए ना, इजी. हाँ, इस बार मैं इजी देती हूँ. चलो, तुम लोगों को समझ में आया तो ये तुम्हारा टास्क है. मैं स्केलेटन्स लिख रही हूँ, प्लीज समझ में आना चाहिए कि स्केलेटन का मतलब क्या है. वो फ्रेमवर्क है ना. ओके. सो 1 2 3 4 5. हाँ, मुझे लिखते लिखते तुम लोग बोल रहे हो हाँ हमको पता है कि क्या कंपाउंड होने वाला है. CH2F. Should I make it clear? Okay. So this is CH2 and then F. So this is the task. Okay. Copy कर लिया. अगले वाले में चले. Okay. I told you I'll take a mixed bag of questions जहाँ पे सब कुछ एक साथ मौजूद है. Cyclics और aliphatic और aromatics और ठीक है. 4th वाले में चलते हैं. Now I will draw a bond line. Bond line. Mountains. When you draw bond line, the corners and the edges have carbons. है ना? So I hope I have been able to convince you about that. So I have a 1 2 3 3 4 5 6 7 carbon system. Alright, 7 carbon system. मैं 5th कार्बन में ये लगा देती हूँ. क्या है? ट्रायंगल. ट्रायंगल माने साइक्लोप्रोपेन. 4th कार्बन में 2 Cl लगा देती हूँ. ओके, 2 Cl लगा देती हूँ. तो मैंने पहले से नंबरिंग क्यों कर ली? क्योंकि you have to know the lowest addition rule. फिर से ये 1 + 4 1 + 4 + 4 + 5 कंपेयर टू उल्टा करके देखो. मैं नहीं करने वाली हूँ. बस बहुत लोएस्ट एडिशन
रूल, लोएस्ट सम रूल सिखा दिया बस। अभी तो तुम लोगों को स्ट्रेट कट नाम आ जानी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज 144 ट्राई क्लोरो, नेक्स्ट 5 साइक्लोप्रोपाइल, 5 साइक्लोप्रोपाइल हेप्टेन। ठीक है, डन। Okay, so let me give you one. This is my fourth task. For you to solve, Baba. Okay, bond line में लिखूंगी, similarity रखूंगी, गिन लो साथ है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7, there are 7 carbons. Now on ये लगा देती हूँ, 2 3, इसमें ठीक है, कॉपी कर ले, पॉज कर लो, लिख लो नाम अभी के अभी। ओके, we'll go to the fifth compound. हाँ, एरोमेटिक्स कर रहे हैं भाई, रुक जाओ 2 मिनट, रुक जाओ, अभी आ रहे। आई होप यू नो समथिंग विच, ये CH3 थ्राइस सी ऐसे लिखती हूँ तो इसका मतलब क्या होता है कि ये कार्बन में 3 CH3 अटैच्ड है, उसी का दिस इज हाउ दिस इज इंटरप्रेटेड ना। ओके, सो दिस C डबल बॉन्ड Cl, देखो, you can write, I could have written C6H4 or C6H5 depending on what compound I want to write. ये मुझे I लगानी है, एक डबल बॉन्ड लगानी है, कहाँ पे लगाओ, कहाँ पे, यहाँ पे लगा देती, ठीक है। So now what will you do? There is a benzene containing a halogen and the alkene containing the halogen. अभी पेरेंट किसको बनाए, किसको बनाए, किसको बनाए, सोचो। अरे पापा, यही वाली पेरेंट होगी, क्यों, इसमें ज्यादा ब्रांचेस दिख रही है ना, Cl का ब्रांच, फिनाइल का ब्रांच, CH3 का ब्रांचेस, ये सब। सो नाउ लेट अस नंबर इट, 1 2 3 4. So we have a phenyl on the first carbon, remember, but we need to write it alphabetical order. So this will be 1 पे अपना क्लोरो है, 1 क्लोरो, 3 पे अपना डाई मिथाइल है, बट वी हैव एन आयोडोफिनाइल ऑल्सो, IJKLM ना, तो आयोडोफिनाइल वाला पहले लिखते हैं फर्स्ट कार्बन में, ऑन द फर्स्ट कार्बन। अभी आयोडो कहाँ पे है, यू विल सी फ्रॉम हियर, 1 2 3 4, ओके, फोर्थ कार्बन में आयोडो है, अरे नंबर के बाद हाइफन देना मत भूलना, एक डैश एक हाइफन, फिनाइल हो गया, IJKLM। अभी आते हैं मिथाइल पे, ये 2 मिथाइल्स है, तो दिस इज 3 डाई मिथाइल ब्यूट 1E। हैप्पी, या आई हैव बीन एबल टू टीच यू समथिंग, वेरी गुड। हो गया सीखना, पॉज कर लो भाई, अगर समझ में नहीं आया थोड़ा रुकना है, पॉज कर लो, समझो, फिर देखो, रिवाइंड करो, देखो। ओके, लेट अस गो टू द टास्क, सिमिलर टास्क रखूंगी, आई प्रॉमिस यू। हाँ, लेकिन मैं ट्रिकी प्रॉब्लम्स भी दे सकती हूँ, वो प्रॉमिस नहीं है, सोचना है भाई, वैरायटी सिखा रही हूँ, वैरायटी करना है ना।
Let me put a Cl. सिमिलर टाइप मैंने नहीं बोला कि एकदम सिमिलर दे दूंगी, सिमिलर टाइप. ऑलराइट, बी केयरफुल. Don't forget the longest chain rule also. That's a hint for this question. I want to go to the sixth one. Easy peasy. परेशान हो गए क्या? Easy peasy. थक गए डिफिकल्ट वाले करते करते तो इजी वाले करते हैं. अब भी क्या? F5. हाँ, अभी तो तुम लोग जानते हो that this is 1 and this is 2. लोएस्ट एडिशन करने से सेम है तो अल्फाबेट रूल. यस, अल्फाबेट रूल. क्लोरो का सी है ना उस कार्बन में, लेकिन लेफ्ट कार्बन में फ्लोरो का एफ या आयोडो का आई आता है. तो अगर लोएस्ट एडिशन रूल राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट सेम है तो अल्फाबेट को भाव दो. गिव अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू द अल्फाबेट. सो इट इज 1 क्लोरो, 1 1 2 trifluoro, and then ethane. Done with this task. Now task या यही पे लिख देते हैं. ओके, रुको भाई, पेशेंस करो. हाँ, या. So this is yours. This is CH3. This is C2H5. So this is your task number 6. परेशान हो गए? पूछ रहे हो कितना है? 10 तो कम से कम सॉल्व करनी है ना एक सिटिंग पे. नहीं तो फायदा क्या है ये भाई ये सब करके. चलो, नहीं नहीं नहीं, अभी वाइंड अप नहीं. 7. मैं सिखा रही हूँ ना. सब लोग, सब कुछ तुम लोगों के मैंने थोड़ी छोड़ा है. आई एम ऑल्सो सॉल्विंग थिंग्स फॉर यू. कुछ कुछ प्रॉब्लम्स देखोगे एनसीईआरटी में है. एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में है. एनसीईआरटी 12th के एक्सरसाइजेस में. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच इज प्रेजेंट. ये बहुत धमाल वाला है. तो पहले, this is written in a condensed form in the textbook. This is the open structure. So whenever you have condensed structure, see that you open up the structures. It really opens up, broadens out your head to think out कैसे उसका naming करनी है. All right. So this is propane, which is the parent. All right, propane, which is the parent. अभी देखो, anyway you number it 1 2 3, ये सेकेंड कार्बन में क्लोरोमिथाइल आएगा. So 2 पे there is a chloromethyl. All right, and then we have 1 1 1 2 3 3 3. 1 2 3 4 5 6 7. There are 7 chlorines. So it's heptachloro. Heptachloro. 2 क्लोरोमिथाइल पहले लिखे. 2 क्लोरोमिथाइल. 1 1 1 2 3 3 3 हेप्टाक्लोरोप्रोपेन. ठीक है, अभी टास्क देते हैं. चलो टास्क देते हैं. क्या फायदा भाई, बस सीखने के लिए बैठे हो ना, टास्क तो देना ही चाहिए. लेट अस गो टू द 7th टास्क.
Okay, how many carbons have I given? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so please copy down. This is the task. The task is done. Okay, let us clear it. Go to the 8th question. Okay, थोड़ा सा aromatic वगैरह लेना है. Okay, aliphatic भी लेना है. ले रहे हैं ना. Aromatic लिया था ना. तो okay, 8th question करते हैं. So let us put a CH3 here, Cl here, and a CH2, CH3 here. Now this is an interesting problem. Why? Let us try and number it. Okay, let us try and number it from bottom to top. क्लोरो का सी ना वही सोच रहे हैं ना. So 1, 2, 3, 4. We will not go clockwise at all. We will go anti-clockwise because clockwise if you go it will give again a greater addition. We don't want a great addition. You want, it's called the lowest addition rule. So we should take a low addition. So if we add up the location of the branches, it is on 1, 3 and 4, 8. Now let us number it in this fashion. 1, 2, 3, 4. Where do we have the groups? 1, 2 and 4. It is 7. Yeah, it is 7. So which is correct? The green numbering is correct, na? Yeah. So we will now name it according to the green numbering. And yes, लिखने वक्त alphabet. लिखने वक्त alphabet. So it is 4 chloro. क्लोरो का सी पहले आता है. Then 2 ethyl, 1 methyl, cyclo. Done? Yeah, and now for a task. What task do I give you? Okay. Uh, task 8. और बस और 2 बाकी है. ये टास्क देने के बाद एक समझा 2 समझाऊंगी और 2 इजी है. डोंट वरी. So your 8th task is, पूछोगे ये क्या ऑक्टागन बना दिया है. रुक जाओ यार, मुझे अच्छा एक क्वेश्चन आ रही है. So this is your task. Okay. Now let me go to the next one, the 9th one. पेंटागन बना दिया. एक में ब्रोमो लगा दिया. एक में प्रोपीन बनाते हैं. Okay, let us make a propane. And then let me put a CH3. Do I put any other functional groups? No, that's enough. Okay, so this is 1 bromo. Next there is this is 1, this is 2. Then there is a 2 methyl. And what is this group? This is a propene group. Propene. Yeah. So propene, when one hydrogen is replaced, it is called propenyl. So on the first carbon, I have a propenyl, but I need to indicate the position of the double bond. This carbon which is attached directly to the parent, the cyclopentane, this is 1, this is 2, and this is 3. So we have a propene, but we are specifying that 1 pe prop, it's 2n. Yeah, it's prop 2n and 1 I. That means where is your radical exactly attached? That is the place I'm specifying. Propane 1 I. All right, 1, it's a propenyl. So we're breaking it up. I could have said propenyl where the double bond would have been between the carbon 1 and 2. But we need to specify that the double bond is between 2 and 3. So it is prop
2N1 and then you have your cyclopentane. Okay, I hope I was able to clear it. And a similar kind of task now. So this is your task 9. I've not made it tough. I've made it easy so that you can solve it. Okay, so this is your 9th one and last. Bas. Okay, the end is coming for this episode. बस ये हो जाने से खत्म. और आई होप तुम लोगों ने कुछ सीख भी लिया है खेल खेल में. Yeah. Okay. So this in this cyclopentane, it's a strain system where it exactly behaves as a double bond. So ये जो area है ना, ये जो area है, ये जो bond है, it behaves as the plane. जहाँ पे bromine and hydrogen above the plane है and दूसरे hydrogen and bromine below the plane है. तो ये क्या है? Trans. Yes, correct. So trans. So trans 1, 2, dibromo cyclopentane. बोलते हैं ना all's well that ends well. एकदम easy सा एक टास्क दे देते हैं. The 10th task बहुत ही easy. So just like your cyclopentane is strained, so similarly your cyclopropane is also strained. Yeah. So this is your 10th task. Okay, noted it down. So I have come to the end. Yeah, and hope you have enjoyed this session with me and looking forward to my future episodes. I have decided to stick on to nomenclature. एक काम पहले खत्म कर ले फिर उसके बाद we'll strategize the reactions ये सब करना है. सो अभी क्या करेंगे अगले एपिसोड में हम लोग अल्कोहल ले लेंगे. अल्कोहल ऑन फिनॉल. तो आप लोगों ने मेरे एपिसोड्स फॉलो किए हैं तो ये आइसोप्रोपाइल टर्ड ब्यूटाइल नियोपेंटाइल जो हमने अल्काइल हैलाइड्स के लिए अप्लाई किया था वही सेम फैक्ट विल अप्लाई टू अल्कोहल्स. ओके, बाय. दैट्स ऑल फॉर टुडे.